that's a simple method, and it turns out to be a psychoactive technique. It strengthens the circuitry for caring and compassion. The Dalai Lama, who I wrote the book for, The Force for Good, it was for his 80th birthday actually, has a program, it's a vision. Here's what he would love people to do. This is the best present you can give me, he says. And by the way, if you want to know more about it, there's a website called Join a Force for Good. And the 4 is the number 4, Join a Force for Good. But he says there's basically 3 steps. The first is to compose yourself. Be mindful or MBCT, whatever helps you be calm and clear. The second is adopt an attitude of compassion. It's an ethical outlook. It's a predisposition to help. And then the third is to act now in whatever way you can. And he has a map. He says there are 4 or 5 areas where action is really needed. I'll tell you what they are. They're not the only ways to help, but I find them very, very helpful. The first, he said, is we know we really need transparency. The world is full of corruption and collusion. He lives in Asia, and a lot of Asian countries, the graft, they call it bakshish, is explicit. It's a cultural norm. There are other countries, like, say, my country, I don't know about your country, where there is a lot of collusion at the highest level. We have a president who's trying to give big tax breaks to the richest people. He happens to be one of them. That's a kind of collusive act. So the Dalai Lama says this is very dangerous for the world. It erodes trust. And it's just not fair. And whatever you can do to expose it, he says there's dirty business, dirty politics, dirty science, dirty religion. They all need to be cleaned up. And they need 3 things: transparency and accountability. So, you know, I think of the Catholic Church and all the sex abuse that went on, or all the private schools, the fancy private schools where it's just coming out. There was no transparency and no accountability. Now there's transparency. Next step is make people responsible for their actions. And by the way, he's a big fan of the Pope, the Dalai Lama, because the new Pope, he says, finally, he says, we have a Christian Pope. We have someone who's, so, because he's doing all of these things. The second is economics. He said, you know, the growing gap between rich and poor around the world is a moral crime. The system we have, and Richard is one of those economists who's trying to find a new way around it, the system we have just does not work because it favors owners and handicaps workers. Owners' share of the pie gets bigger and bigger faster than workers, and workers' share. Do I have this right, Richard, more or less? Is that right? Workers' share is shrinking? Yeah. Okay. I just want to check. He's an expert. Yeah. And he says not only do we need to reinvent the economy, but we need businesses that operate for the good, not just for profit. And I was talking to him about a bakery in New York that was started by a Zen teacher whose Zendo was in a very poor neighborhood in an area called the Bronx. And he wondered what they could do to help people in the neighborhood. And they realized that the neighborhood was full of, you know, single moms on welfare and, you know, ex-felons who couldn't get any job of any kind. So they decided to start a bakery. And do they have Ben & Jerry's ice cream in this country? If you've ever eaten Ben & Jerry's chocolate fudge brownie flavor, which I recommend, the brownies in that ice cream come from the Greyston Bakery in the Bronx. This bakery supplies, they send 2 truckloads of brownies up to Vermont every day. The motto of the Greyston Bakery is, we don't hire people to bake brownies, we bake brownies to hire people. It's a new business model. Sometimes it's called a B corporation, which means in the very charter of the company, it's not just for stockholders' interest, like
ordinary corporations, it also has a mission, an environmental or social or compassionate mission. And the shareholders want to see that mission fulfilled as much as they want to make money. So it gives a dual responsibility to the people operating the company. And then there's, many corporations have what's called corporate social responsibility. The one that surprised me is Unilever. I'll tell you a story about Unilever. It's a big company here, right? Unilever was founded by a guy who was a son of a bitch. He was a robber baron who was known and hated throughout the Netherlands and Belgium because in the late 19th century, this, I have to tell you, it was his own grandniece who told me this. I met her. She said everybody hated him because he claimed he had a patent on margarine, which was like a big new discovery in the late 19th century. And he put everyone else who was a competitor out of business. And he ended up owning all those companies. He unified all the margarine makers in Benelux through strong arming, basically. He had a company called Uni, U-N-I-E in French. And he realized that the main ingredient in margarine at the time was palm oil, and that he could have an economy of scale if he would combine with a soap maker. And there was a lever in Britain making soap. So they joined forces. That invented Unilever. Fast forward several decades. That was the foundation of Unilever. A friend of mine is coach to one of the co-CEOs of Unilever. At the time they bought Ben & Jerry's. Did you know that? Unilever owns Ben & Jerry's. Why did they buy Ben & Jerry's? Because they wanted the idealistic DNA of Ben & Jerry's to infect Unilever. That was the strategy. That was the hope. Now, Richard and I were a couple years back at Davos, the World Economic Forum. Another guy who was there was Paul Pullman, who's the CEO of Unilever. He announced there that they had a number of corporate goals. One of them was not only a drastic reduction in carbon footprint, another was to incorporate 500,000 small farms in the third world into their supply chain. That is big because it meant they had to help those farmers upgrade their operations so that they could be dependable suppliers, which means that those farms, which had boom and bust cycles, would have steady income. The World Bank says the best way to help the education and health of an economy, of a local community in the rural third world is exactly that, steady jobs. So what they're doing is a social good. It also probably is good for their flexibility in supply chain. So it's dual role. There's a company in California called Salesforce. It's a big marketing company. Has a very idealistic CEO. He has what he calls 1-1-1. 1% of profit, 1% of people's time, 1% of product to charity. And he's gotten a lot of other big tech companies to do the same. So there are many, many ways for companies big and small to be models, and the Dalai Lama applauds all of that. A third, and this is one that I think is probably done a lot here in this community, the Action for Happiness community, it's helping out people in need, and whatever that need may be. But the Dalai Lama says something interesting. He says something that other people are saying too, which is the best way to help people in need is to help them help themselves, if you can find a way. Teach a skill or whatever. Graceland Bakery is a good model. Another one is the us and them thinking, which is created divides around the world and is always a cause of war. What we did is a big challenge. When we went from compassion and wishing well people we love toward neutral people, other people in London, and people everywhere, that also includes some very unpleasant people. It may include people across that divide, whatever divides we personally may have. But he says that is the key step, that if we had the sense of oneness of humanity, we wouldn't have these troubles between groups. He really lives it. I've seen this. He pays no attention to
status, rank, income. He doesn't care about any of that. Someone who's traveled with him for a long time said, back when Gorbachev was in the Kremlin, went to the Kremlin to visit him. He's going up the steps to the Kremlin. Apparently there are a lot of steps in front of the Kremlin. And there's a guy standing there with a Kalashnikov, like the guards at Buckingham Palace, not moving. The Dalai Lama sees him and goes over and shakes his hand very warmly. And the guard said later, 25 years of standing here, no one has noticed me. But that's the Dalai Lama. He sees everyone really the same and treats them that way. Then there's the environment. The environment is a really interesting one because the Dalai Lama says, if you're really going to understand and help, you need to analyze the system that's created the problem and come up with a systemic fix if you really want to be effective. And the problem with the environment is this. The global warming, which is a byproduct of our everyday activity, these lights, everything that we wear, that we use, the chairs, the stage, has what's called an embodied footprint. What that embodied footprint is the cumulative impact on the 8 global systems that support life on the planet. Carbon is just one. Water is another. Potable water is going to be a desperate thing, probably way before the climate crisis. Anyway, we all inadvertently are part of a very large system which is slowly destroying the ability of our planet to support life. So once you understand that, then you see that, this is what's called the Anthropocene age. This is the part of my talk that's really like a little depressing. So just bear with me. It gets more uplifting later. So anyway, so the Anthropocene age is the first geological age where one species, us, is impacting the entire world geologically and meteorologically and so on. The problem is that our brain was designed during the Pleistocene, during a different age, where, as I said, the amygdala, which is the sentinel, the radar for safety, evolved. And so our sensory system evolved during the same period. And our sensory system, it turns out, is oblivious to the impacts of what we do. The changes are too small, too micro, or too macro for us to see, hear, sense in any way. So we're oblivious to the harm we do. Not only that, our amygdala, our whole survival threat system, is wired for another range of threat. It's the saber-toothed tiger, the car that's about to hit us. It's not climate warming. In fact, our survival system in the brain kind of shrugs. So we need a workaround. We need to think systemically. One of the proposals is that we have radical transparency. Radical transparency would take this glass and say, this is not a product, this is a process. It starts with sand that's gathered and chemicals that are made and mixed together, and then it's all heated at a very high temperature for a very long time. By the way, a Bronze Age technology we still use for glass, steel, concrete, and bricks. It's one of the worst causes of climate warming, but hey, worked before. So they break it down. There's a new discipline. It's called industrial ecology. They have something called life cycle assessment. They break this glass down into almost 2,000 separate steps. At each step, they can analyze impacts in air, water, soil, carbon, so on. In other words, there is now a way, a methodology for understanding at a very fine-grained level the impacts of all of this. If you recycle your yogurt carton, right? If you have yogurt in a little carton, do you have it in glass or a plastic carton? Plastic carton. Okay, so you can feel good by recycling your yogurt carton. Do you know how much of the carbon impact you remediate by recycling your plastic yogurt cup? 5%. In other words, we are oblivious to the other 95%, which is mostly cows.
Cows produce a lot of methane, which is even worse than carbon. And they do it because industrial farming gives them a kind of feed that their stomach is not used to. But it helps make a lot of yogurt very quickly. The other point is that whenever the earth is being degraded, pretty much someone is making money somewhere. So hand in hand with rethinking economics is rethinking environmental impacts. The bottom line is we not only need to reinvent systems, I think we need radical transparency about impacts because we as consumers could make very different decisions. And if we create a market force that favors the better way of doing things, then companies will start to shift. But also, we need to reinvent everything. I don't know if anyone here has any entrepreneurial interest, but everything in the material world is made in a way that harms the planet because we didn't know what the impacts were. We never thought about it in those days. There were 2 students at a technical school in the States reinvented styrofoam. Styrofoam is one of the worst things for the earth. It never disintegrates, ever. It's petroleum, doesn't mix with water. So they reinvented styrofoam by coming up with something that works the same but is made out of rice hulls, natural byproduct of milling rice, and mushroom roots. Wow, it's called Ecovation is the company. And this is fantastic. This is a model of products for the future. So these are kind of high level, you might think, ways of changing things, but there are 1,000 ways each of us can act in any of these realms. And the Dalai Lama says it does not matter what specifically we do, what matters is that we act now. I love that this is called action for happiness. He says, you have to stay optimistic too. He says, he met the Queen Mother, Queen Elizabeth's mother, when she turned 100. And he said to her, you've lived a century. Do you think things are getting better or getting worse? And she instantly said, oh, they're getting better. And what she meant was that when she was young, the world was a very different place. You know, look at women's rights. The change over the century is stunning. Look at the fact, and as an American, I'm very grateful for this, that this country, which once was a huge colonial power, has virtually no colonies anymore. They're independent nations. She saw that as progress. If you look at the newspaper, I'm a reformed journalist. I used to be at the New York Times. If you look at the newspaper, the headlines are designed for the amygdala. You want to know what the danger is, what the threat is, and you want to be prepared implicitly. So that's what sells newspapers. But if you were to take all of the acts of oppression, hostility, and hatred on the one hand, and all the acts of goodness on the other, people making lunch for their kids, or just civility, kindness in every form, the acts of kindness far outweigh the acts of negativity and hostility every day of the year. It's just not news. We take it for granted. So the fact is that we can all be agents in a force for good. It's up to each of us to find the particular way that we can act. Thank you very much. Okay, we have just gone through the details of Dan Goleman, and he was talking about that how the people can be mindful and how that mindfulness can actually help them create a better future. Then he talked about amygdala hijack. He talked about the teachings and the preachings of Dalai Lama. Then in a couple of perspectives, he was there to come up with different examples that how the mindfulness is creating a difference in the economies, in the minds of the people, in the general context of the Mother Earth. And in every concern, we have to see that how this mindfulness is going to give us benefit, the longer term return. If we just trickle down the main ideas coming out of the mindfulness, it is saying that attending the world, like keeping the world in a holistic view and finding out the ways in which we can be more participative, more concerned with the people, with the nature, and with the development. Another major concern of the mindfulness is adapt productive and positive ways. It is also talking about avoid biased
preoccupations. Obviously, we should not be biased for the general public. We should not be biased for the people around us. We should be evaluating everyone on the basis of certain merit, and obviously understand subjective experiences. ये सब आपके main concerns हैं जिसमें कि हम mindfulness को लेकर आ सकते हैं when we're talking about the mental development. इसकी की characteristics को अगर हम देखें तो mindfulness से related we have relate to inner and outer world, बिकॉज हमारे इनर स्पिरिचुअलिटी के जो कंटेक्स्ट हैं और जो आउटर वर्ल्ड के कंसर्न्स हैं, इन दोनों में जो ताल्लुक है दैट कैन बी एस्टैब्लिश्ड एंड दैट कैन बी बेनिफिटेड थ्रू द प्रैक्टिसेस ऑफ द माइंडफुलनेस. सेकेंडली, द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइंडफुलनेस इज रिकॉग्नाइज ऑटोमेटेड पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग, कि हमें ये पता चल सके कि हमारी जिंदगी के अंदर कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो प्रोसेसेस क्यों हो रहे हैं, उसके क्या आउटकम्स हैं, उसके बैकग्राउंड में रीजंस क्या हैं, हम अपने आप को क्वेश्चन कर सकें, हम अपनी सोच को क्वेश्चन कर सकें, हम सोच को डायरेक्शन दे सकें. सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर अगेन कमिंग आउट ऑफ द mindfulness practices. And obviously the third aspect is quick response to changing situations, and we have to be more focused and attentive. These are the main concerns related to the mindfulness. Then your author is talking about how mindfulness can help leaders. Okay, so when we talk about in terms of leaders, so these are the few questions which echo in our mind. For example, how a leader sees the world. तो अब किसी भी लीडर का एक दुनिया के बारे में, उसके फॉलोअर्स के बारे में जो पर्सपेक्टिव है, दैट पर्सपेक्टिव इज कमिंग आउट ऑफ द माइंडफुलनेस पर्सपेक्टिव ऑफ द लीडर. ओके, कि वो दुनिया को किस नजर से देखता है, वो किस किस्म का विजनरी है, वो किस तरह की तब्दीली वहां पर लेकर आना चाहता है. ठीक है, उसके मोटिव्स क्या है, उसके कंसर्न्स क्या है. सेकेंडली, हाउ ही और शी इज पोटेंशियली गोइंग टू एक्ट. ओके, फिर उसके रद्द अमल क्या होंगे, उसके फैसले क्या होंगे जो कि ऑब्वियसली असरअंदाज हो रहे होंगे उसके सारे फॉलोअर्स के ऊपर. एंड द थर्ड मेन कंसर्न व्हेन वी टॉक अबाउट लीडरशिप एंड माइंडफुलनेस इज बेसिकली व्हाट आर द रिजल्ट्स, कि किसी भी लीडर ने फिर इवेंचुअली आउटकम्स क्या जनरेट किए और क्या वो आउटकम्स डिजायरेबल भी थे या डिजायरेबल नहीं थे. तो दीज आर द मेन थ्री कंसर्न्स जिसमें कि हम माइंडफुलनेस को लीडरशिप के साथ अटैच वो कर सकते हैं. Then to develop the mindfulness, there are certain ways, there are certain training sessions जो कि mindfulness training में आपको लेकर आते हैं. उसमें attention, learning and memory processes, इन सब के ऊपर फोकस किया जाता है. Emotional regulation के ऊपर फोकस किया जाता है. आपका emotional labor practices से गुजारा जाता है so that you are becoming more emotionally intelligent. And then there is self-referential processing, जिसमें कि आप अपने आप को एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम पिक करके इवेल्युएट कर सको कि व्हाट नेक्स्ट यू नीड टू कम अप विद. एंड लाइकवाइज ये तमाम बातें ऑब्वियसली हमारे पर्सपेक्टिव के ऊपर बेस कर रही होंगी, because sometimes we are talking about the same thing but due to different perspectives we visualize the thing differently. So अब different perspectives क्या हो सकते हैं, एक ही बात के बहुत से अंदाज क्या हो सकते हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जो कि माइंडफुलनेस ट्रेनिंग में आपको सिखाई और बताई जाती हैं. अब माइंडफुलनेस पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो उसमें लीडर्स परसेप्शन अबाउट रियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जैसे हमने पिछले आर्टिकल में भी डिस्कशन की थी कि द लीडर शुड नॉट बी हैविंग फॉलोड वो कहीं शेयर्ड मैडनेस का शिकार ना हो. द लीडर शुड बी हैविंग द राइट परसेप्शन अबाउट द रियलिटी सो दैट द फॉलोअर शुड नॉट बी प्लेइंग मेंटल एक्रोबैटिक्स टू मैच अप विद द लीडर. इसी तरह माइंडफुलनेस पर्सपेक्टिव में कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन की हमें जरूरत है कि हम जो तब्दीली लेकर आना चाह रहे हैं वो कॉन्शियसली अकर हो रही हो, ये ना हो कि हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को हाईजैक कर लें. इसी तरह एक्सपीरियंस बेस्ड पर्सपेक्टिव के ऊपर बात होगी. एंड द लीडर नीड्स टू बी मोर रेजिलिएंट, क्योंकि जब तक उसमें रेजिस्टेंसेस को ओवरकम करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी, जब तक वो कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स को ओवरकम नहीं कर सकेगा, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द लीडर टू कम अप विद द राइट डिसीजन. Then your author of the article is talking about mindlessness and talking about automaticity and the human condition. अब यहाँ पर ऑटोमेटिसिटी से क्या मुराद है? ऑटोमेटिसिटी से मुराद है कि आप ऑटोमेटिक जो माइंड प्रोसेसेस हैं वो आपको गाइड एंड ट्रेन करना शुरू कर देते हैं. एंड दैट मीन्स कि आपका जो कॉन्शियस माइंड वर्किंग है, आपकी जो माइंडफुलनेस है, इट हैज गॉन इन लाइक रिसेसिव सिचुएशन. उस perspective में there is a beautiful sentence your author was talking about, and he said that habitual ways of understanding produce habitual reactions. तो हमारी जो अनकॉन्शियस हैबिट्स होती हैं बाज़ औक़ात वो हमारे बहुत से रिएक्शंस, बहुत से डिसीजन मेकिंग उसके आड़े आ जाती हैं. And habits are basically the things which actually make up your character as well. तो we have to be very much careful कि हमारी हैबिट्स वो क्या हैं और उन हैबिट्स के बैकएंड के ऊपर अनकॉन्शियस माइंड प्रोसेसेस वो क्या क्या हैं, ऑटोमेटेड माइंड प्रोसेसेस वो क्या क्या हैं, so that we can create more control for our better future.
जब हम माइंडलेसनेस एंड ऑटोमेटिसिटी की बात कर रहे हैं तो कॉन्शियस एक्शंस आर ऑब्वियसली लिमिटेड एंड ऑटोमेटेड प्रोसेसेस जिसमें कि ऑटोमेटेड थिंकिंग, ऑटोमेटेड फीलिंग, ऑटोमेटेड जजिंग, ऑटोमेटेड एक्टिंग, ये सब कुछ हमारे लिए प्रीडोमिनेंट हो जाते हैं. एंड दीज आर ऑल थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू क्रिएट द heuristics for us. And as you all may know that heuristics would mean that these are the judgmental shortcuts. जैसे कि आपका stereotyping perspective है, जैसा कि आपका hollow effect है, projection error है, recency error है, inferiority complex है, superiority complex है. तो ये तमाम चीजें आपके automated processes हैं जिनके बारे में हमें mindful होने की जरूरत है अगर हम इनको कंट्रोल करना चाहते हैं cognitively. इसी तरह आपके जो माइंडलेसनेस एंड ऑटोमेटिसिटी के हम फर्दर अगर डिस्कशन करें तो ऑटोमेटिसिटी एंड स्टेबिलिटी कैन बी एस्टैब्लिश्ड, लेकिन ऑटोमेटिसिटी एंड स्टेबिलिटी से आपकी डेवलपमेंट, इनोवेटिवनेस, क्रिएटिवनेस ये आपकी मौत पड़ जाती है. सो ऑटोमेटिक प्रोसेसेस आर इजियर टू सेट बिकॉज ऑब्वियसली वो माइंड उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा होता है, ऑटोमेटिकली डिफेंसिव मैकेनिज्म्स एमिगडाला से जनरेट हो रहे होते हैं. सो ऑटोमेटिंग बिहेवियर रूटीन्स कंजर्व लिमिटेड रिसोर्सेज बिकॉज ऑब्वियसली हमारा जो माइंड प्रोसेस है वो वेस्टेज को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा और वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा. लेकिन बाज़ औक़ात हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उस ऑप्टिमम सॉल्यूशंस में हम कहां पर कौन-कौन से ट्रेड ऑफ्स कर रहे हैं, और बाज़ औक़ात वो ट्रेड ऑफ्स हो सकते हैं कि आपके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद ना हो. Likewise, leadership challenges and mindlessness की जब हम बात करते हैं तो perceptual skillless focused because हम receptive पैरामीटर्स के ऊपर ज्यादा फोकस्ड होते हैं माइंडलेसनेस में रादर देन परसेप्चुअल पर्सपेक्टिव्स. इसी तरह नॉन कॉन्शियस प्रोसेस डिस्टॉर्ट जजमेंट एंड ऑब्वियसली अनविलिंग टू चैलेंज ओन प्रिजम्पशंस, क्योंकि आप उस केस में अपने आप को सवाल नहीं कर पाते, और जब आप अपने आप को सवाल नहीं कर पाओगे, अपने आप को चैलेंज नहीं कर पाओगे, तो जाहिर है कि जिस तरफ आपका नेचुरल बेंट ऑफ माइंड चल रहा होगा आप उसी तरफ फ्लो करना शुरू कर दोगे विदाउट हैविंग योर कॉन्शियस माइंड एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट व्हेन व्हाई यू हैव टू डू समथिंग more constructively and more positively. Then your authors is talking about mindlessness and the drive to survive. और जब हम mindlessness and drive to survive की बात करते हैं तो उसमें obviously हमारे जो automated behaviors हैं which are basically triggered through the amygdala, उनकी डिस्कशन आपका ऑथर करता है. वो कहते हैं कि these reactions are associated with amygdala, और इन amygdala processes की वजह से जो कि fear से create हो सकते हैं, they are basically occurring and causing us to come up with lack of creativity. There would be lack of cooperativeness, and obviously there would be lack of adaptive responses. अब अमिगडाला हाईजैक बेसिकली जब होगा जिसमें कि आपका थिंकिंग माइंड जो कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट थिंकिंग माइंड वुड बी कट शॉर्ट फ्रॉम योर फीलिंग माइंड, और उससे क्या होगा, आपका जो फीलिंग ब्रेन है वो थिंकिंग ब्रेन को इवेल्युएट नहीं कर पाएगा. देयरफॉर when we talk about organizational perspective, तो उसमें organizational cultures and stress create होने से what you would be coming up with, you would be coming up with demotivated behavior, you would be coming up with learned helplessness, and you would be coming up with no meaningful contribution towards the development of the organizations. Okay, यहाँ पर हम एक छोटा सा पॉज कर रहे हैं. Okay, ji, I am resuming again our discussion. We were talking about amygdala hijack, और amygdala hijack जो कि हमारे prefrontal cortex को hijack कर लेता है, we are not able to think positively. उसमें क्या होगा कि हमारा जो रिफ्लेक्स सेक्शन है दैट वुड बी प्रीडोमिनेंट, और वो रिफ्लेक्स सेक्शन जब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा, जब हम अनकॉन्शियस माइंड प्रोसेसेस के साथ बिहेव कर रहे होंगे, तो उस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑफ स्ट्रेस के अंदर विल बी डीमोटिवेटेड, विल बी देयर टू हैविंग नो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, एंड देयर वुड बी लर्नड हेल्पलेसनेस जो कि हमें और ज्यादा उस प्रॉब्लम की तरफ धकेल रही होगी. तो अब ये वो तमाम पर्सपेक्टिव्स हैं जिनको हल करने के लिए, जिनको ओवरकम करने के लिए हमें माइंडफुल प्रैक्टिसेस की वो जरूरत है. अब आपके ऑथर अपनी आर्टिकल में लिखते हैं कि इंटेंस सर्वाइवल रिएक्शंस बाज़ औक़ात वो अकर करते हैं, और उसमें अगर हम स्टीरियोटाइप थिंकिंग की बात करें तो यू कम अप विद नैरो अटेंशन एंड पर्सपेक्टिव, यू कम अप विद एंगेजिंग कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो कि जहन के जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं उसको फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं. वी विल बी देयर विद टू अंडरमाइन द एबिलिटी टू सस्टेन अटेंशन, और हमारा जो एक और प्रॉब्लम अकर करेगा दैट विल बी मोर रिएक्टिव, एंटी सोशल एंड डिस्ट्रक्टिव in our context of thought and mind processes.
Therefore, ये तमाम जो intense survival reactions हैं, ये क्या करेंगे? Because these intense survival reactions are taking place because of the cultural stress prevalent in an organization, और आपका amygdala hijack वो हो चुका है, तो अब होगा क्या? आपके reactive emotions वो predominant हो जाएंगे, which can be the anger and fear. There can be undermining of well-intentioned leader. There can be a compromised effectiveness. There can be undermine team effort. एक और प्रॉब्लम ये हो सकती है कि they can be weaken commitment to organization, और ये सब कुछ रिजल्ट करेगा into underperformance, burnout and physical and mental harm. तो these are all the perspectives जिनको अवॉइड करने के लिए हमें माइंडफुल ट्रेनिंग और माइंडफुल पर्सपेक्टिव की जरूरत है, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक ऑर्गेनाइजेशनल लीडर की कि वो अपने आप को खुद पहले माइंडफुल बनाए, ताकि देन वो अपने फॉलोअर्स को भी गाइड एंड ट्रेन कर सके हाउ कैन दे बी मोर माइंडफुल. अब माइंडफुलनेस पोटेंशियल प्रॉमिस फॉर लीडर्स की जब हम डिस्कशन शुरू करते हैं फ्रॉम द आर्टिकल, सो इट इज टॉकिंग अबाउट माइंडफुलनेस ट्रेनिंग. और माइंडफुलनेस ट्रेनिंग में द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स अप इज दैट लीडरशिप इटसेल्फ इज ए स्ट्रेसफुल टास्क, और उस स्ट्रेसफुल टास्क में माइंडफुल रहने के लिए यू नीड टू कम अप विद माइंडफुल ट्रेनिंग. उसमें आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू बी मोर इमोशनली रिएक्टिव. यू शुड बी एबल टू कम अप विद अटेंशन एंड वर्किंग मेमोरी. यू शुड बी एबल टू कम अप विद परसेप्शन एंड कॉग्निशन जो कि कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रही हो टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्वियसली द फॉलोअर्स. यू विल बी एबल टू कम अप विद मोर एम्पैथी, डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन. तो ये तमाम चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइंडफुलनेस ट्रेनिंग. अब जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, मैनेजिंग द स्ट्रेस ऑफ लीडिंग, तो उसमें being a leader there is a stress of power. Being a leader there are certain ambiguities of authority. Being a leader there are inherent loneliness, because हम लीडर को एकदम से सेपरेट कर देते हैं, एकदम से हम उसको एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर डील करना शुरू कर देते हैं कि यू आर द लीडर एंड वी आर द फॉलोअर. अब वी और यू के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या करता है कि लीडर को इनहेरेंट लोनलीनेस में वो ले जाता है. और इसी तरह माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जो है दैट इज समथिंग व्हिच इज ऑब्वियसली कॉलिंग फॉर मोर टाइम एंड रिसोर्सेज फ्रॉम द लीडर. तो रिमेंबर वन थिंग कि जब हम लीडरशिप पर्सपेक्टिव में चीजों को देख रहे हैं तो लीडरशिप कैन आल्सो बी हाईली स्ट्रेसफुल. आप ये मत समझिए कि लीडर जो है वो सिर्फ फन टाइम के लिए वहां पे होता है, वो सिर्फ जिंदगी को एंजॉय करता है. द लीडरशिप कैन also be highly stressful, and when the leadership is perspective is highly stressful, तो वो right वक्त होगा, उस जरूरत होगी इस अमर की कि उस वक्त फिर आप माइंडफुलनेस के साथ अपने आप को मैनेज और कंट्रोल करने की कोशिश वो करो. Now, if we talk about adaptive challenges, so the two terms which are discussed by the author in the article are eustress and distress. ओके, और जब हम यूस्ट्रेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली दैट इज अ पॉजिटिव थिंग, जिसमें कि पॉजिटिव स्ट्रेस आपका होगा. यू आर टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन, परफॉर्मेंस, मोटिवेशनल वेलबींग. और जबकि आप डिस्ट्रेस की जब आप बात चले जाओगे तो दैट इज नेगेटिव स्ट्रेस व्हिच इज टॉकिंग अबाउट एंड व्हिच इज सफरिंग फ्रॉम फटीग, कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर. तो अब हमें खुद से ये डिसाइड करना है कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द नेगेटिव स्ट्रेस टू द पॉजिटिव स्ट्रेस तभी अकर कर सकती है व्हेन वी आर मोर माइंडफुल. इसी तरह जब हम मैनेजिंग रिएक्टिव इमोशंस की बात करेंगे तो उस केस में जो ऑथर इज टॉकिंग अबाउट दैट द लीडर नीड्स टू हैव अ वेरी क्लोज टाई विद द फॉलोअर्स. ओके, और इफेक्टिव लीडर जो है वो फॉलोअर्स के मूड्स को, इमोशंस को, थिंकिंग पैटर्न्स को, वो इन सब चीजों को समझता है और उन ग्रुप प्रोसेसेस को समझता है जो ग्रुप प्रोसेसेस एक लीडर को डेवलप कर रहे हैं, एक फॉलोअर्स के पर्सपेक्टिव के अंदर इन्वॉल्व हैं. उसमें लोगों के दरमियान कोऑर्डिनेशन कैसी हो रही है, आप एफर्ट एक्सपेंडिचर आपको क्या करना पड़ रहा है, टास्क स्ट्रेटेजी आप किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करोगे. तो दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच द लीडर नीड्स टू टेक केयर अबाउट. अब माइंडफुलनेस ट्रेनिंग में द लीडर नीड्स टू अंडरस्टैंड द मूड, इमोशन, फीलिंग्स, थॉट्स ऑफ द फॉलोअर्स. और जब तक ये टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगी, द फॉलोअर्स आर आल्सो देयर टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव्स ऑफ द लीडर, उस वक्त तक एक राइट एक्सचेंज आपका अकर नहीं करेगा व्हिच वुड इवेंचुअली रिजल्ट इनटू डिजास्टर. लाइकवाइज आपको माइंडफुलनेस ट्रेनिंग से गुजरना है, आपको अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना है और आपको वो स्ट्रेसेस आइडेंटिफाई करने हैं जो एक्चुअली आपकी डेवलपमेंट में रुकावट का सबब वो बन रहे हैं. Likewise, your author also talked about attention and working memory and perceiving reality beyond one's blinders. Usme, there is a very interesting quotation I was able to come up with, and the quotation is that reality is what you perceive it to be. Because reality की perception हमारे लिए सबसे important है. Unless and until we don't perceive something taking place, हमारे लिए वो चीज शायद exist भी नहीं करती. So reality is what you perceive it to be, not the reality itself. That is the main thing we have to understand.
अब इसी परस्पेक्टिव में अटेंशन एंड वर्किंग मेमोरी को जब हम मद्देनजर रखेंगे तो वी नीड टू कम अप विद कॉग्निटिव कंट्रोल, एज डैन गोलमैन वाज टेलिंग इन हिज लेक्चर कंटिन्यूअसली कि हम कंपैशन से, हम एम्पैथी से, हम सेल्फ अवेयरनेस से कॉग्निटिव कंट्रोल वो अपना अचीव कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली एट द सेम टाइम वी हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट एंड वी हैव टू रेगुलेट द इमोशंस व्हिच आर एक्चुअली एनसर्कलिंग अस। अब उसमें हमारी परसीविंग रियलिटी की डिटेल को अगर हम गो थ्रू करें तो वी ओनली नो व्हाट वी नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। सिर्फ ये एक जुमला हमारी जिंदगी के बहुत से मसले हल कर देता है कि वी ओनली नो व्हाट वी नो, एंड ऑब्वियसली वी कैन नॉट नो व्हाट वी डोंट नो। सो वी हैव टू बी वेरी मच माइंडफुल। हमें इस बात को बड़ा कॉन्शियस लेवल पर समझने की जरूरत है कि व्हाट एक्चुअली इज दैट वी नो। इसी तरह जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो व्हाट वी आर एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, और उस पूरी कम्युनिकेशन नेटवर्क में कहां कहां पर कौन कौन सी नॉइजेस वो डिस्टॉर्ट कर रही हैं इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन को। इसी तरह एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, टेक्नोलॉजिकली, इकोलॉजिकली, इन्वायरमेंटली वो आपके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, और उन तमाम पर्सपेक्टिव्स को हम समझ सकें कि इन सब की रोशनी में व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। Likewise, every person is having certain internal biases, उसके कुछ heuristics हैं, judgmental shortcuts हैं। So इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखने के लिए mindfulness training is actually required। उसके बाद जब हम बात करते हैं कल्टीवेटिंग एम्पैथी की, तो एम्पैथी के बारे में इट इज सेड कि द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इमोशंस इन oneself and others, दैट इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ व्हाट एम्पैथी इज टॉकिंग अबाउट। Likewise, जब हम एम्पैथी की बात करते हैं तो दैट इज द कॉग्निटिव कंपोनेंट डिस्क्राइबिंग द कंपिटेंसी टू टेक ओवर द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन। ओके, सो जितना आप कंसर्न होगे, जितना आप केयर करोगे, सो उतना ही आपका एम्पैथी कंसर्न में डेवलप करेगा, एंड ऑब्वियसली दैट वुड बी लीडिंग टुवर्ड्स द इमोशनल इफेक्टिवनेस एज वेल, इमोशनल इंटेलिजेंस एज वेल। Likewise, empathy is an effective component that is sharing the emotional states of with others. और जब तक लीडर एम्पैथेटिक नहीं होगा तब तक इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके से अपने पर्सपेक्टिव को अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करेगा। जब हम कैपेसिटी फॉर एम्पैथी को बढ़ाने की बात करते हैं तो वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री की एक्सप्रेशंस। What is our thinking mind doing? What are our feeling perspectives telling us? And what we are actually sensing when we are dealing with the other people, when we are trying to be empathetic? तो उसमें एक बात तो याद रखिएगा कि एम्पैथी के कंसर्न्स में आपको सिंपैथी को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। यू डोंट नीड टू बी सिंपैथेटिक, यू डोंट नीड टू बी एपैथेटिक। द फर्स्ट स्टेप वुड बी यू नीड टू बी एम्पैथेटिक। और एम्पैथेटिक होने के केस में द रिलेशनशिप विद द फॉलोअर्स शुड बी इन टर्म्स ऑफ relationship related to their thinking, relationship related to their feeling, and obviously relationship related to their sensing। अब जब हम कल्टीवेट करने की बात करें एम्पैथी को, तो द लीडर नीड्स टू कम अप विद द पर्सपेक्टिव जिसको कहा जा रहा है कि रिड्यूस negative emotions and increased positive assessment, that is the role which is coming from the leader। और followers के केस में they need to come up with reduced distress and improved eustress। क्योंकि जब तक वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करेंगे, जब तक वो हैप्पीनेस की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक वो चीजों के मुस्बत मायने को नहीं देखेंगे, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टॉप देयर क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। और ये सारा कुछ तभी मुमकिन है जब दोनों पर्सपेक्टिव्स में, लीडर्स एंड फॉलोअर्स के पर्सपेक्टिव में, देयर इज माइंडफुल ट्रेनिंग। अब जब हम बेटर डिसीजंस की बात करते हैं तो याद रखिए कि डिसीजन मेकिंग इज सब्जेक्टेड टू योर रैशनैलिटी एंड इंट्यूशन। And obviously जब हम rationality perspective को देखेंगे तो situation would lead to decision criteria, would lead to alternatives, would lead to optimum choice, would lead to execution, and would lead to result, and that would complete the loop of rationality। लेकिन इसी के सारे के साथ साथ हमारा जो sixth sense है, हमारी जो rationality है, that is always taking its place and taking its shape। So therefore याद रखिएगा कि mindfulness in decision making के केस में हमें इन की कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना है कि व्हाट इज अवर वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी, व्हाट इज सुपीरियर डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव, और इमोशन रेगुलेशन की हमें कब कब कहां कहां कैसे कैसे वो जरूरत है। इन तमाम चीजों को इन डेप्थ एनालाइज किए बगैर हमारे लिए डिफिकल्ट होगा दैट वी बिकम माइंडफुल। यहां पर